स्टार्ट कर दिया है. Yes. So last class we have discussed about the interactions, and those interactions actually occur in the presence of field. And field is normally quantized, and if it is quantized, means it will be inferred as a particle kind of thing. Means something, there is a some kind of entity which is carrying the interaction from one particle to other particle. So interaction we have discussed, and what are the particle, and there's some properties, for example mass, spin, charge, and their lifetime. So that we have discussed. And just hold on. पेन टैबलेट थोड़ा सा इशू कर रहा है. Just hold on. Yes. So those are actually interacting particles. They don't make matters. They just do the interaction. तो हमारे पास मैटर वाला जो पार्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो आज करेंगे कि which make up the things. तो जो आपको नेचर में जितने भी whatever you are able to see that, whatever you are able to feel that, or any sense you are analyzing those things, they all are made up of certain things. And what are the basic entity of those things? So in basic entity, we have two different kind of maximum, most of the thing. Last time I think I have told you that around 4% of the universe we know, and they are made up of certain things, which is actually the basic constituent of any matter, which are normally the neutron, proton, and your electron. These are the three basic, you can say, entity or basic elementary particle, not the proton and neutron, but at least at present, the electron is an elementary particle. So we have to classify these things, and how many particles we have in the nature. Some of them we don't know, and some of them we even never had measured them or detected them, but still they must be existing by some other law. We don't know exactly, but when you will see, the things are, there are so many things which is strange, which is happening in the particle physics. So why they are happening, and what is the basic theory behind that, what are the interaction is going on, we don't know exactly. For example, dark matter, we don't know what is a dark matter. Still we are searching for that, that which particle is going to justify that it is a constituent of a dark matter. We don't know exactly, and that is 21, more than 23, around 23% in the universe. And then we have dark energy. Dark energy, we even don't know that it is a particle or it is an energy or it is a vacuum. We still don't know anything. Dark matter का तो फिर भी हमें पता है कि it interact through masses. Means mass के साथ वो interact करता है, gravity के साथ interact करता है. It has a gravitational interaction. But other interaction it doesn't have any. Means strong interaction or weak interaction or any electromagnetic interaction. The dark matter don't show any kind of result. हो सकता है वो रिजल्ट बहुत फीबल हो, वी डोंट हैव द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दैट, बट इट शो अ ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ. मींस डार्क मैटर मस्ट बी हैविंग सर्टेन मास. अगर ग्रेविटेशन फोर्स जो भी पार्टिकल फील कर रहा है, इट मस्ट बी हैविंग अ मास. So we certain thing know about the dark matter, and many things we don't know about the dark matter. We are searching for the good candidate. Neutrino was one of the candidate in last 20, before 20 years. It was one of the candidate for dark matter, but उसको भी अब out कर दिया गया. WIMPs एक नाम से particle, weakly interacting massive particle, something like that. And dark energy we don't know, still we don't know. Means there is still to search 96% of the universe. वो आपके हाथ में है. You can search about them कि भाई वो है क्या, what are the means constraint and what kind of interaction is going on. We don't know, and you can search that. तो आपके पास ऑप्शन है. हो सकता है अगले 20 साल या 30 साल के अंदर हो सकता है कोई ऐसा एक्सीलेटर बने which can make a good amount of energy at a very small point in a space, and that can give rise to certain more things. But what we know, we can classify them. जो 4% हमारे पास नोन है, जो कि मैक्सिमम है, उससे हमारा सारा काम चल जाता है. From birth to death, we have used only those things. So the first category, first हमने पढ़ लिया, which is field particle. The second category, so second classification है particles का, that is called leptons.
Lepton is a word which is for light particle in Greek. So lepton is a light particle which have very less mass. Mass means mass is not very much. They can be treated as light particles. They don't have any mass. Most of the cases we just don't do the mass calculation for these particles. But they have certain mass. Obviously, the electron is one of the candidate in this. So electron का भी mass होता है, but कम होता है. If you compare with the proton and neutron, so that is 1,000 times less. So that is not going to do any big difference. But अगर lepton के reaction से study कर रहे हो सिर्फ lepton के, then its mass is important. So they are truly elementary particle. So they are elementary at present. Elementary का meaning क्या है? It doesn't have any sub structure. Means if you look at the leptons, you don't find any further more structure in that. But if you go to the Planck length, what the people have thought that electron would have certain structure also. Because why it is having a spin half? The spin half itself say it must be having certain structure. That when it is rotating 2 times, then only we see the same face of the electron. So it must be some kind of a structure is going on. So there may be a certain more charges within that particular electron. And there is another reason for that also. That when you go for the proton have charge 1, but it is confirmed that it is made up of 3 particles and they have fractional charge. So why don't the leptons have a fractional charge? We have found that all the leptons have a unit charge, means -1 in capacity. They have -1. But why don't we have a fractional 1/3 charge? It means somewhere researchers are thinking lepton may have certain structure, just like a proton and neutron. But its mass is very small, its size is very small. So still it is very difficult to fit that, or you don't able to measure that. At least हम कह सकते हो कि हमसे measure नहीं हो रहा है. We cannot measure that. So let us just classify how many leptons are there which we have measured and which is existing in the nature. तो हम लास्ट में जब मैंने आपको बोला था कि कितने पार्टिकल से पूरा हमारा जो 4% यूनिवर्स है, how many particles are there which is making this whole universe? Okay, let me just see, someone has message. What message? Message तो कोई नहीं है, but link. Okay. Then what can be the spin of the particle without structure? Sir, means ये कब पूछा? अभी मैंने बता तो दिया आपको. Then what can be the spin of particle without structure? So I can say that is photon. They have a spin 1. If you rotate them 360, you will see the same face. So spin 1 means if you say कि photon is there and photon has a spin 1, it means you can say that it doesn't have any structure. It doesn't have any structure. Means आप structure का meaning ये मत समझना कि उसका shape क्या है. We are not talking about the shape. Actually, it is made up of something. That is what the structure is meaning and how they are arranged. For example, if I say you कि आपने nucleus के shell structure देखे हैं, और न्यूक्लियस के शेल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि न्यूक्लियस इज इटसेल्फ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, दैट इज अ फर्मी साइज, उसका रेडियस होता है. बट व्हेन यू गो इन डीपर इनटू द न्यूक्लियस, you find certain levels which is allowed level for proton and neutron. They cannot go anywhere, they cannot sit anywhere, they have to go to certain orbits only. So that is a structure, that is called a structure. We don't have any line is made, but the proton is somewhere here and it should have this kind of energy. This is called a structure. तो हम फोटोन को कह सकते हैं. फोटोन अगर आपसे कोई पूछता है कि what is the size of photon, +-1 का मीनिंग क्या है? विकास मैं समझा नहीं, +-1 का मीनिंग क्या हुआ? What is +-1? I'm not understanding what you are saying. +-1. अच्छा, फोटोन का स्पिन. फोटोन का स्पिन तो for timing it is 1 - 1 spin photon है. Do we have? पता नहीं सर, नहीं, minus means -1 spin. I have never seen such kind of thing. हाँ, spin 1 है, फिर उसके सब डिविजन. फॉर एग्जाम्पल हम सब डिविजन कब करते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए आइसो स्पिन है.
आइसो स्पिन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी एंड दैट विल बी अ नंबर, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/2, 5/2, 7/2. But if that member is having certain more particle which is quite equivalent to that, means all the properties are same, only spin is varying, even the spin is same. For example, proton and neutron, their isospin is half only, but for proton we say its projection along the third axis is plus half, and for neutron it is, this is our understanding. When I say it is plus half and minus half, that is our understanding that yes, whenever I do the derivations, whenever I use the wave function, there I will put minus sign. That will say me ki, yes, you are doing the things for the neutron. When I say plus half, it means you are doing for the protons. But for a force, it means for a strong forces, they both have spin half, and you can say iso spin is half. तो दोनों के लिए मींस फॉर अ न्यूक्लियर, फॉर अ स्ट्रांग फोर्सेस, इट डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू. उसको नहीं पता है कि भी प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उसको नहीं पता, क्योंकि वो स्पिन को सिर्फ हाफ में ही जज कर रहा है. बट फॉर आवर कैलकुलेशन वी असाइन दिस. फॉर फोटॉन we hardly have any photon or any boson with -1 spin. Even the graviton is having +2. तो हमारे पास 1 है और प्लस है. जो हाफ स्पिन या जो जिसको एंगुलर मोमेंटम माइनस में आप देखते हो ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन, दैट इज अ प्रोजेक्शन. अदरवाइज इफ इट इज अ नेसेंट, इट इज अ फ्री पार्टिकल, देन इट विल हैव ओनली हाफ पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव में नहीं होगा. नेगेटिव का सेंस तब आता है जब उसे आप किसी आप उस ट्रैप में डालते हो, मींस बाउंडेड सिस्टम में आप जब डालते हो. तो इलेक्ट्रॉन का भी होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर फ्री छोड़ दो, दैट इज हैविंग अ प्लस हाफ स्पिन. बट इफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, इट कैन हैव प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. सो दैट इज अ बाउंडेड सिस्टम. बाउंडेड सिस्टम में दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट फ्री के लिए इट इज नथिंग इज लाइक माइनस हाफ. इट कैन ओनली हैव रोटेशनल काइंड ऑफ इफेक्ट कुड बी देयर, बिकॉज यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड. आपका जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. तो मैग्नेटिक फील्ड तभी जनरेट हो सकता है व्हेन चार्जेस इज मूविंग. तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, इट मींस देयर इज अ सम काइंड ऑफ रोटेशन, बट दैट रोटेशन इज एग्जैक्टली नॉट लाइक अ स्पिन. दैट कुड बी व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन वी डोंट नो. हमने कभी उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा नहीं, उतना छोटा माइक्रोस्कोप बना नहीं है. We can see that it is moving, doing something like that. Even if you start thinking like a particle, आप क्या करते हो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देते हो. हम हमेशा करते हैं गड़बड़. जैसे जब भी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिस्कस कर रहे हैं, तो वी डिस्कस करते 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 वी गो इनटू द पार्टिकल. और बच्चों के दिमाग में या जो भी ऑडियंस है उसके दिमाग में भी आता है, यस दैट इज लाइक अ पार्टिकल. तो जब पार्टिकल इमेजिन कर लोगे ना, तो you just lose the essence of quantum mechanics or wave kind of analysis. तो पार्टिकल भी मत इमेजिन करो. इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइक अ पार्टिकल. ऑब्वियसली दैट हैज बीन प्रूवन. अगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन मेक इंटरफेरेंस पैटर्न. हाउ दैट कुड बी पॉसिबल इफ इट इज अ पार्टिकल? इट मींस वी डोंट नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल और अ वेव. तो we can never picture it. We can never take a capturing of any electron. That is not possible. You can only get an idea, yes, electron was present somewhere here, electron was present somewhere here when you do the experiment. So it is very difficult to digest the structure of these particles. मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है. मैं तो वेव की तरह अगर समझूं तो स्पिन वगैरह का कोई मीनिंग नहीं है. दैट इज सम काइंड ऑफ, अगर वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, and those parameters are something like, some are charge parameters, some are spin parameters, some are mass parameters, something like that. And using those parameters you make a function that is a mathematical function, and that is a wave function. तो उस वेव फंक्शन में उस पार्टिकल का स्पिन भी इंक्लूडेड है, उसका मास भी इंक्लूडेड है, उसका मोमेंटम भी इंक्लूडेड है, उसकी एनर्जी भी इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है. तो वो तो आपने पैरामीटर चूज, दैट इज समथिंग लाइक आर्गुमेंट. आपने वहां पे आर्गुमेंट, जैसे होता है ना साइन थीटा है तो थीटा इज आर्गुमेंट. तो साइन थीटा का भी फंक्शन हो सकता है, थीटा 1 थीटा 2 का भी फंक्शन हो सकता है. इट कैन हैव एनी फंक्शन व्हिच इज हैविंग सेवरल आर्गुमेंट. तो इफ यू इमेजिन इन दैट वे, देन यू कैन नेवर पिक्चराइज द थिंग इन द ब्रेन. आपके दिमाग में अगर पार्टिकल समझ लोगे तो बिल्कुल पार्टिकल की तरह ट्रीट करने लगते हो, वेव समझोगे तो वेव की तरह ट्रीट करोगे. तो we don't know what is that. Exactly what I can say. We don't know what is that, but we can say after doing certain diffraction experiment or certain scattering experiment, we can say that electron does not show any structure, because जो आप एटम को बम्बार्ड करके
जब आप फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को बम्बार्ड करते हो, मींस प्रोटॉन को यू आर बम्बार्डिंग विद very high speed electron, and when you bombard with a high speed electron, those electrons do the scattering as per the neutron size. Or if you have such kind of very high value, for example, I am talking about value which is giga electron volt, which is very high for electron. Electron आप giga electron volt तक उसको accelerate कर रहे हो, you are bombarding them on the different kind of atom. But every time you do the scattering with the nucleus only. Means if you put 1 giga electron to electron and you can find the de Broglie wavelength, that de Broglie wavelength will be very small. It is a fraction of Fermi. तो फ्रैक्शन ऑफ फर्मी तक जाने के बाद भी, यानी -15 क्या -16 पे चला गया उसका वेवलेंथ, स्टिल इलेक्ट्रॉन इज नॉट डूइंग स्कैटरिंग इन दैट वे. इलेक्ट्रॉन डज नॉट शो इन स्ट्रक्चर. भैया एटम के पास तो इलेक्ट्रॉन भी है ना, उसके सी में, इलेक्ट्रॉन के सी में ही तो वो आपका न्यूक्लियस है. You cannot remove all the electrons from the atom which you are bombarding. So every time you get the picture of nucleus, but you don't get the picture of electron. Electron से scattering होगा, but scattering will be something like a different thing, maybe a different. It will not show a different kind of structure. Nucleus का दिख जाता है, but उसका कभी नहीं दिखे. So still people are thinking we have to go to the wavelength of at least a wavelength. It should be more than less than 10 to the power of -20, or ideally जो imagine कर रहे हैं, it is 10 to the -30, and it is very difficult to measure and very difficult to generate that kind of wave. आपके पास अभी तक ऐसा कोई एक्सीलरेटर नहीं है जो इस वेवलेंथ का, de Broglie वेवलेंथ का पार्टिकल जनरेट कर सकता है. We don't have, because the electron is the lightest one, and आप उसी को एक्सीलरेट कर सकते हो मैक्सिमम स्पीड तक. जैसे आप प्रोटॉन पे जाओगे तो प्रोटॉन को तो उसका मास ही 1000 टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो यू कैन नॉट गिव दैट काइंड ऑफ वेवलेंथ, हमेशा वो 1000 टाइम्स नीचे ही रहेगा. So electron is the lightest member in all these particle physics, and you can only accelerate these electrons to get that kind of wavelength. But still, we are very far from that particular value. So that is why these leptons, these leptons have no structure. Means there is no X. If you talk about these particles, then there is no X, no Y, and no Z. You don't have any structure. Means if I write tab में क्या इशू आ रहा है, एक मिनट. X is 0, Y is 0, and Z is 0. So it is a point particle. Exactly, you can say that is a point particle. Now, how many particles are there? So the first member, I will write particle here, and there is antiparticle. You always have an antiparticle for every particle in nature. And when you count those, the antiparticle has been lost somewhere in the फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ है तो उसके हार्डली, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड्स के बाद ही एंटी पार्टिकल का एग्जिस्टेंस, या 1000 ईयर्स के बाद एंटी पार्टिकल का एग्जिस्टेंस हैज बीन वॉश्ड अवे. सो वी डोंट फाइंड एंटी पार्टिकल इन अ फ्री, जैसे हमारा मैटर मिल रहा है वैसा हमारा एंटी मैटर नहीं मिलता इजीली. तो द फर्स्ट मेंबर इज योर इलेक्ट्रॉन, which is having -1 charge. This is the lightest member of the lepton. बाकी जो मेंबर है उससे हेवी. तो जो लाइटेस्ट, सबसे लाइटेस्ट मेंबर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन. एंड वी हैव नेवर फाउंड एनीथिंग व्हिच इज लाइटर देन दिस and having similar property as electron have. So we have not found yet, and that is why it has been the starting step of the lepton. And its antiparticle is plus positron, we already know. Then we have mass. ये टेबल बनाने को आता है एग्जाम में कि भी आप लेप्टॉन्स को क्लासिफाई करिए, जितने भी लेप्टॉन्स हैं, और उनके सारी प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए. मास, then we have charge, then we have a spin, and then we have lifetime, and then we have decay rate, if any decay reaction, if it is being formed, and that decay also. So कोई decay reaction है उसका exist करता है कि नहीं करता है, that we have to write here. So
The mass will be around 0.511 mega electron. This is in mega electron volt. All the masses we are writing in mega electron volt. So 0.5 mega electron, that is very light. Okay, and we have plus minus one charge because minus iske paas hai, plus iske paas hai, and the spin is half. We don't have minus spin. Okay, and that is stable in nature. एक बार form हो गया तो stable है, वो decay नहीं होता है. Once it is formed, it cannot decay. So there is no decay reaction for this particular particle. And its brother, you can say it's not brother exactly. Brother is something else. You can say associated particle. Whenever you have a reaction, means any strong interaction kind going on or weak interaction kind going on, or any electromagnetic interaction is going on, the electron, whenever it's generated or being annihilated in both the process, there is a release of another particle, and that will release only when electron has been emitted. Not every time. For example, if gamma is decaying, so gamma can decay into electron and positron. You don't have the third particle. But when you have a beta decay, so proton neutron में convert हो रहा है, and it is giving you two things. एक बार वो anti एक particle देता है electron के साथ, और जब वो positron decay होता है तो वो एक particle देता है. So there is one particle which is associated, you can say. So those are called neutrinos, which we have already seen. So they are associated, means whenever you have electron, there is a possibility of finding this kind of, and these neutrino are related to electron only. Means electronic, इसको हम कहते हैं normally electronic neutrino. Means whenever you have a reaction in which electron is being emitted, there is a possibility of finding a neutrino which is classified as an electronic neutrino, which is associated with these electrons. So their anti-particle, yes, we have the anti-particle. Charge is zero. Imagine, this is again a different thing. Charge is zero. Charge is zero means charge are same for both the particle. Spin is same for both the particle. So what kind of anti means what kind of anti is there? ये हमने डिस्कस किया हुआ, जब हमने इनवर्स बीटा डीके डिस्कस किया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि this could do a reaction with proton, but this could not do a reaction with. It means these two are particles are different, even though their charge is same. Normally हम हमेशा ये समझते हैं कि एंटी मैटर मींस प्लस माइनस वाला जो चार्ज होता है. पॉजिट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर है, अगर एंटी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन है और माइनस चार्ज के साथ है. तो वी ऑलवेज इमेजिन इन दैट वे कि चार्ज अगर डिफरेंट है तो दैट इज एंटी मैटर. इट डजंट मीन समटाइम द रिएक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन मींस reaction will be done by two different particles, even though they have all the properties are same. But this particle is doing this reaction, but other particle with a similar property does not do this reaction. It means that is a antimatter or antiparticle for that particular particle. So iska bhi antiparticle hota hai, even though the charge is zero. Their mass, if you call it the what is the mass, so we have already done the calculation. हमने थोड़ा सा किया भी था calculation, if you remember. जो आपका न्यूट्रॉन का डीके था उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया. तो दिस इज अराउंड 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हिच इज 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इट इज 100 टाइम्स. ये तो 0.5 है, दिस इज 46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज इन मेगा, सो 100 के 1000 टाइम्स 2 ऑर्डर का है, ये 0.1 का ऑर्डर का है, तो 1000 टाइम्स का डिफरेंस. ये 10⁻6 है, ये 10⁻0 है. अगर दोनों को देख रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दिस 10⁻6, बट यहाँ पे एक पॉइंट में जा रहा है, यहाँ पे डबल में जा रहा है, तो 3 ऑर्डर यू कैन रिमूव. तो 1000 टाइम्स इट इज लाइटर. So they are very light particle. They are hardly, you can imagine, for most of the purpose they are just like a photon. So electronic neutrino can be treated as a photon most of the cases, but they have certain mass. This mass is not exactly zero. So they have, this is the rest mass. What we are writing is the rest mass. We are not writing the moving mass. Moving mass is zyada hoga when it is moving with the speed of light. So this is a rest mass. Means particle needs certain energy to be created. आप particle को freely create नहीं कर सकते, because photon is something which is having a zero and you can create that particle from nowhere. But for this you require certain energy. There is a rest mass and then you have a motion. So the charge is zero. The spin is half. Spin half आया था because beta decay का spin conservation follow नहीं कर रहा था, तो we are saying कि this must be having a spin half, and that is stable also. This stability actually helped people
कि भाई आप इसको एज ए एंटी डार्क मैटर इमेजिन कर सकते हो कि एक बार न्यूट्रिनो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो दे एग्जिस्ट। आपके सन से न्यूट्रिनो का शावर डेली एवरी सेकेंड बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो आर बीइंग emitted because fusion reaction is going on in the core. तो जब भी फ्यूजन रिएक्शन होगा तो आपके पास न्यूट्रॉन की एग्जिस्टेंस होती है और जब फ्यूजन रिएक्शन होता है तो एंटी की यू कैन कैलकुलेट दैट, यू कैन सी दैट आल्सो. सो शावर ऑफ न्यूट्रिनो इज देयर एंड न्यूट्रॉन जब जनरेट हो गया so it cannot decay. It can do a reaction. For example, electron can do a reaction, neutrino can do a reaction, but itself it cannot decay. So वो stable particle है nature. Then this is called a first generation of lepton. तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ lepton में दो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो एंड देयर एंटी पार्टिकल. सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ, यू कैन से फर्स्ट जनरेशन. नॉर्मली नाम लिख देते हैं बट उसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. So these are first generation, lightest member of the lepton family. Then the next member is, we have already seen this member. कौन सा है? Next electron के बाद कौन सा member है? We have seen that and हमने उसको लिखा भी है, यूज भी किया है reactions में, कहीं पढ़ा भी है. First unit में पढ़ा था. क्या लिखे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन को किससे हम रिप्लेस करते थे एटम में, और एटम बिकम अ न्यू काइंड ऑफ एटम. You remember that if you replace an electron by something else and that atom become a new atom, and that can be used to determine the radius of nucleus, if you remember. इसका मतलब एक तरीके से समझ लो कि इसका सेकेंड जनरेशन हैवी वेट, जो इससे थोड़ा सा हैवी है. नहीं याद है किसी को? muon something. Muon. And muon with negative charge. So they are heavy. They are heavier member, and this is something called as a second generation of leptons. Second generation में, and most of the higher particle means as the mass increases, they have instability, means they will start decaying, and its anti will be muon plus. So this is a muon and muon plus, and its mass is roughly 105, 20 something लिखा था हमने, roughly इसके order के आसपास का mass है in mega electron volts. So that is heavy than this particular electron. So quite heavy, 100 times something like that. And they have plus minus charge, means plus and minus there is a charge, and again the spin is half. All the leptons will have a spin half, and their lifetime is 2.2 into 10 to the power of -6. Normally the decay, it will decay into this and this. This is mu actually. Let me write it again. This is mu. I will write this, what this particle is. Again, as the neutrino which is associated with electrons, similarly we have a neutrino which is associated with muons also. तो mu particle के साथ भी हमारे पास दोनों exist करते हैं. ठीक है? So this is something like a second generation of lepton, and their mass is less than 0.5, यानी quite heavy, something like electron. तो इसका जो mass है वो electron के आसपास का mass है. And they have zero charge. Obviously they are neutrino, so they have zero charge. Their spin is half, and they are stable. Again they are stable. Then we have another generation. This is the third generation, and we don't have any fourth generation. Maybe sometime after some years may some people find, but still this is what we only have 3 generation of lepton. We don't find any fourth generation. So the third one is tau minus and tau plus. So electron, muon, tau, electron, muon, tau, and we have associated neutrino with these also. This is tau and this is m. This is something which is third generation. तो जैसे कंप्यूटर में हम चिप के जनरेशन देखते हैं ना, तो वैसे ही लेप्टॉन के भी जनरेशन. The mass of this tau is very high. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये मास है. It is heavier than proton, even though it is called as the lightest elementary particle. Means with such a kind of mass, how that can be an elementary particle?
This is the question. With such a heavy mass, how can this particle do not occupy any space, which is not possible? So that is why the people are thinking, yes, this must be having certain structure. Electron don't have, but this tau must be having. तो ये मास बहुत ज्यादा है. दिस इज कितना है ये? तो हमारा जो वो होता है 930 होता है. प्रोटॉन का मास है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दिस इज 1700, डबल टाइम, but very heavy tau, and it doesn't have any xyz. How this could be possible? This is not possible. Okay, so plus minus 1, again the charge is there, and this will have charge 0, and this has having less than 164 mega electron volt. This is also quite heavy, means something which is concerned with the pions. अगर pions हमने पढ़ा था ना, pions के masses around 500, 230, 236, 700, something like that. So pion के mass के आसपास का mass in neutrino के पास है. And again they are stable also. All the neutrinos are stable. Once they are formed, they exist in the nature. They can do the reaction with other particle, but if they are moving freely, they don't do the decay. So their spin is half. This is also having half, and this is having a lifetime because this is very heavy. So lifetime भी इसको बहुत कम मिलेगा. Minus 13 seconds. These are in seconds. So this is minus 13 seconds, and it can have 2-3 different way of decaying. तो बहुत सारे पॉसिबल वे हैं जिसमें वो डिके करता है. सबके अलग अलग परसेंटेज भी है. कुछ मींस दिस डिके इज अराउंड 60%, दिस डिके इज 20%, और दिस डिके इज 2%, समथिंग लाइक दैट. सो दे कैन डिके इनटू म्यूनिक neutrino and electronic neutrino, and it can decay into electronic neutrino and tau neutrino. This is tau. And this is amazing. It can decay into a heavy particle because it has a good amount of mass. So pion is not a lepton. It means only अगर question आता है कि which lepton can decay into a meson or a hadron. This is a hadron. ये hadron के class में आता है. So only tau can decay into. Tau has a capability of generating a hadron particle. Means a lightest elementary particle have a capability of generating a heavy particle. So this is really amazing. And then there is rho. Rho is again a you can say meson. So rho भी आपका एक meson के form में. So these two are quite amazing. That how a lepton can generate a meson, heavy particle. Classification तो उसको हम light particle में कर रहे हैं. They are elementary particle. This is light element. Light elementary particle. Sorry. So light element means lightweight, lesser weight. So how this lightweight particle, obviously इसका mass बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसको lightweight हम कहते हैं because the other property are justifying इसको हमें किस पे रखना है? lepton के class में रखना है. So leptons are truly elementary point particles. Leptons are totally unaffected by strong interaction. They don't follow strong interaction. Means why the electron go inside a nucleus and come out? Because it don't follow the strong interaction. It is getting unaffected. It does not feel the strong interaction. Strong interaction feel करने के लिए क्या करना है? या तो आपको क्वार्क का एक्सचेंज करना है या तो आपको पायॉन्स का एक्सचेंज करना है. And because you cannot exchange these particles, because you are itself you are an elementary particle, you don't have any structure, so you cannot exchange these particles. You don't have that kind of property, so they don't they cannot consume or they cannot consume a pions. So that is why they don't feel any strong interaction. इसलिए इलेक्ट्रॉन कई बार न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता था और बाहर भी आता. कूलम्बिक मींस कूलम्बिक इंटरेक्शन कर सकता है, वीक इंटरेक्शन कर सकता है, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं कर सकता है. वीक इंटरेक्शन करता है तो वहां पे बीटा डीके या वो डीके स्टार्ट होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन या लेप्टॉन्स कोई भी फॉलो नहीं करते. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. And I will also provide the table that what kind of particle follow which kind of interaction, and that is very important table because when you do the conservation you require those things. Then what I have written, they appear identical in a electromagnetic and weak interaction. Means weak और electromagnetic में उनका कोई difference नहीं है. That is something like, or we have already seen that electromagnetic and weak can be clubbed
एज इलेक्ट्रोवीक फोर्स, वो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ऑब्वियसली चार्ज है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन करेगा ही करेगा। वीक इंटरेक्शन में हमने वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, सो दैट इज आल्सो देयर। एंड लेप्टॉन only tau lepton is decaying into a meson. ये भी एक important point है। So these are some important point of leptons. Now we come to the other class of particle, which is, ये तो हम second category है, अब हम आ जाते हैं third category. Third category और fourth category actually they are falling into the same thing. Means I will just put the line here, and we have hadron. Hadrons are heavy particles. ग्रीक में ये भी ग्रीक से ही वर्ड से, तो hadrons are heavy particle. और इसकी दो क्लासिफिकेशन है, दो कैटेगरी में, you can put mesons and you can put in a baryons. So there are two different. Mesons are actually in weight they are lesser, but not exactly so less. जैसे हमने ऊपर भी देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि lesser weight का है, but still its weight is heavier than baryon. So these are actually made up of quark and anti-quark. And this could have three quark, and there is no rule of putting a quark or anti-quark. How you can put three anti-quarks, you can put two anti-quarks, you can put all the normal quark. So that is, there is no rule. So I will not put this, but it is made up of three different quark. So we only see these two cases in nature, that quark and anti-quark can club them and can form a particle for a certain time, and you have a triplet form. तो दो ही क्वार्क के दो ही, सिंगल क्वार्क का कोई पार्टिकल नहीं है, मींस सिंगल क्वार्क मींस क्वार्क cannot exist as a free particle. And we have never seen a particle which is having four quark composition. That is also not possible. Why it is not possible, we don't know, but we have not seen that. So what we have seen only these two kind of thing. तो इनको mesons कहते हैं, जिसमें quark anti quark का combination है, और दूसरा हमारा थ्री सेट ऑफ क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन. थ्री सेट ऑफ क्वार्क कैन बी क्वार्क और कैन बी एंटी क्वार्क, एंड कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वार्क आल्सो, जिनका फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट होगा. सो mesons आर हेवी पार्टिकल, एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर पाई, रो, ओमेगा, ईटा. अभी इन सभी का हम एक टेप वो बनाएंगे, चार्ट भी बनाएंगे, उस चार्ट में कहाँ पे फिट होते हैं और इनके अंदर किन किन क्वार्क की, मतलब क्वार्क एंटी क्वार्क की क्या कॉम्पोजिशन है, दैट वी विल राइट. And this exists in plus, minus and zero also. तीनों को possible है. इसमें भी आपके plus, minus and zero possible है. ओमेगा में भी possible है. ईटा में शायद zero possible है. So there are so many different charges and different composition. किसी में up quark और down quark से बना हुआ है, कोई up and down quark के anti quark से बना हुआ है, कोई दो strange quark से बना हुआ है. There are so many. Quark के भी possibility बहुत हैं. But normally this is the lightest member. This is the first generation, you can say. And rest of these generation is not called as a generation, but they are called as a resonance of this particular pi. Means how the resonance will be understood in these particles. Means now imagine, और इस तरह का resonance इसमें भी exist करता है, baryons में भी exist करता है. अब imagine करो that proton is there, and you know कि proton होता है. अभी तक तो हमें यही पता है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि proton is proton and neutron is neutron. And in nucleus we have different levels, and proton can occupy, and proton can go to the upper level, or neutron can go to the upper level, and a nucleus become a excited nucleus. This is what we know. ये तो हमें पता है ना कि nucleus आपका excited nucleus form हो सकता है whenever your lower means valence proton is going to the higher orbit in the nucleus itself. तो जब वो higher orbit में जाता है तो nucleus आपका excited state में चला जाता है. What happens that these particles also have internal shell structure. Means proton itself, it can go into excited proton form. Means the quark within the proton or within the mesons, these quarks can go to the higher state within that particle. Means imagine how means mathematically everything is possible, but we cannot अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट डाइजेस्ट दीज थिंग्स कि प्रोटॉन के अंदर भी सेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, और उसमें जो तीन प्रोटॉन है, तीन क्वार्क हैं, they can occupy different levels, and proton itself can become excited proton. This is very unique. Similarly, the
happens to the mesons also. Mesons के resonance condition होते हैं, means resonance means they go to the different levels or their wave function is different, something like that. So these are the similar kind of particle, but they can go to a, जब भी आप वो resonance पे जब higher scale पे जाते हैं, means their energy is larger, their mass is larger, means their lifetime will become less. तो pions एक lightest member है, बाकी सारे उसके resonance parameters हैं different. mesons थोड़ा सा बस mesons में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. mesons का टाइम कितना बचा, 35 हो गया है. तो mesons का मैं एक बार वो बताता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है. They are a strongly interacting particle, means all the hadron दोनों क्लास हो गया, mesons और barium, they are strongly interacting particle. यानी mesons itself they follow strong interaction. Obviously pions are being exchanged between the two nucleons. तो nucleons के बीच में exchange हो रहा है, so it means that is following a strong interaction. Pi meson is the lightest member, which I have already said you, and free mesons can be produced in nucleon collision. So we can have these mesons, they can be free. तो ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बट ओनली रिएक्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं, या कहीं पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है या न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है या फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, दे कैन एग्जिस्ट देयर, बट यू डोंट फाइंड दीज आर मेकिंग सर्टेन मैटर. हमारा जो बॉडी बना है या कोई भी मटेरियल बना हुआ है, they don't have pions. Obviously within the nucleus the pion is being exchanged, but they are not stable. Obviously they are not stable, you don't find the stability of pions, but freely they can be produced in the reactors only, and they rapidly decay to the lightest member. अगर आपने बाई चांस रो ओमेगा या ईटा को फॉर्म कर दिया, या किसी और के भी आता है, इसमें के भी है, एक के पार्टिकल भी होता है, एंड के के साथ बड़ा यूनिक एक प्रॉपर्टी कनेक्टेड है, विच इज कॉल्ड एज सीपी वायलेशन. तो सीपी वायलेशन तो ऐसे चैप्टर हमारे उसमें है नहीं पढ़ने को, बट चार्ज एंड पैरिटी का वायलेशन करता है ये के वाला आपका जो मेसोन है. There is a very unique kind of property, और then you have a time reverse also. तो एक CPT violation की भी existence होती है. Okay, so any particle which is formed, even the pions is also decaying, and even the omega and eta is also decaying whenever they are formed. So they decay, and they can decay through all the reaction. They follow all kind of reaction. Means a strong interaction to follow करता ही है, but it can follow the electromagnetic interaction because they have charge. And they can also follow certain weakly interaction. कहीं पे वो mesons क्या करता है, weakly decay भी होता है. Strong decay हो रहा है तो it is doing a decay process within 10 to the power of minus 22 or 23 seconds. If it is following a electromagnetic interaction, means it is decaying through electromagnetic interaction, then it is following a time scale of 10 to the minus 16 or minus 18. And when they decay in a very slow manner, sometimes the some pions or some mesons decay in a very slow manner. Very slow means around 10 to the power of minus 8 to minus 10 seconds. That is not very slow for ourselves, but for a particle physics, this is a very small number. So they stay for a certain longer duration. So these means meson can decay through weak interaction also, even though they follow the strong interaction, but they can decay through all the three different kind of force field, that is strong, electromagnetic and weak interaction. तो मेसोन्स की और क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे, वैसे तो इसकी ज्यादा नहीं है, मतलब देन वी हैव जो आपके लाइटेस्ट है पाई मेसोन में तो आपके कोई स्ट्रेंज क्वार्क नहीं है, बट सम मेसोन्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, बॉटमनेस और ब्यूटी, और टॉपनेस और ट्रुथ. तो ये डिफरेंट 4 कैटेगरी ऑफ डिफरेंट क्वार्क है बिकॉज ऑफ देयर रिएक्शन. दे डू द डीके प्रोसेस इन अ डिफरेंट वे, and that not usual way, that is an unusual way, and that is why we need to define a new kind of flavor of quark. एक होता है कि हमें रिएक्शन पता है कि भाई हमने पार्टिकल जनरेट किया और इतने के बाद वो लाइफ टाइम इसका ये है, तो ये इस डिस्टेंस पे पहुंच करके डिके हो जाएगा. समटाइम द पार्टिकल मिसेस, दे मिस्ड फ्रॉम द पाथ. आपने पार्टिकल जनरेट किया और फिर उसको ट्रैक कर रहे हो और बीच में पार्टिकल है ही नहीं, इट इज नॉट, यू डोंट हैव एनी डिटेक्टर, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, एंड सडनली इट अपीयर्स समवेयर एल्स, and then it do the decay process. So this kind of strange unusual reaction is existing in the mesons. और accelerator में बहुत सारे ऐसे reaction होते हैं, and they are classified by different kind of flavor of quark. तो हमारे पास 4 different, हमारे पास up and down quark के अलावा we have up and down quark, जिसमें normally आपका पाई बना हुआ है, but other जो mesons हैं they are made up of something else quark, that is they can have a strange quark also, they can have charm quark also, and they can have bottomness and topness quark also. Bottomness को कई बार किसी बुक में ब्यूटी भी लिखा होता है,
और टॉपनेस को कई बार बुक में ट्रुथ भी लिखा होता है. तो दे आर 4 डिफरेंट अदर कैटेगरी ऑफ क्वार्क and they can make a different way. But mesons are heavy particle and they follow the strong interaction, but they can decay through weak and electromagnetic interactions also. यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं और बेरियंस को हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. देन वी विल गो टू द कंजर्वेशन लॉ. और कंजर्वेशन लॉ जब हम कर लेंगे देन वी विल एबल टू डू कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. दैट वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दैट. और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे. हमारे पास अगर नेक्स्ट वीक के बाद अगर खींचना पड़ गया तो उसके नेक्स्ट वीक में मंडे को हमारा क्वार्क मॉडल को थोड़ा डिस्कस करेंगे जिसमें कलर चार्ज क्या होता है और क्वार्क के ऊपर डिस्कशन होगा. एंड दैट विल एंड आवर सिलेबस. ठीक है. तो अब जो बच्चे वाइवा देने वाले हैं आज के डेट में जिनका रोल नंबर है मेरे पास, वो बच्चे ट्यूटोरियल क्लास में ज्वाइन कर ले एंड दे विल स्टार्ट गिविंग देयर प्रेजेंटेशन और वाइवा व्हाटएवर दे हैव. ठीक है. तो ये क्लास में एंड कर रहा हूँ अभी and starting the tutorial class and there you have to join and give the viva. And those who don't want to attend, that is okay. कोई जरूरी नहीं है. ठीक है. Okay. Sir, if antiparticle diminishes very fastly, then how did we got the proof of their existence? तो proof of existence हमारे पास एक देखो 1950 में भी हो गया था when the neutrino was discovered. Antiparticle, for example, लोकेश ने पूछा है if we have an antiparticle और वो diminish हो जाता है. Most of the particle we don't measure directly. That is not a possibility. आप अगर सोचोगे कि मुझे रो मेजॉन को पकड़ना है और रो मेजॉन मेरे डिटेक्टर में एंटर कर जाए और मैं उसको डिटेक्ट करूं, that is not a possibility. Even you don't able to even detect the strange particles. आप स्ट्रेंज पार्टिकल को उसका जो रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला है कि पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट मींस पॉजिट्रॉन हैज बीन जनरेटेड एंड इट हैज बीन एनिहिलेटेड, तो उसका फर्म रीजन होना चाहिए. फर्म रीजन क्या हो सकता है? पॉजिट्रॉन डू इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन इन अ वेरी मींस नो टाइम. दैट इज अ वेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आपका 10⁻16 -15 या -18 ऑर्डर के सेकंड्स में हो रहा है. तो at least for time being it has been generated and it is doing a annihilation. अब मेरे पास क्या होगा कि जब annihilation होगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, I should get a gamma और उस गामा की वैल्यू 1.2 होनी चाहिए. तो मेरे रिएक्शन में अगर कोई गामा 1.2 का कैलकुलेट हो पाता है then I can say that electron and positron has interacted because these pictures are unique. हमारे पास जो आउटकम है ना, आउटकम किसी रिएक्शन का यूनिक है. हमें अगर गामा फोटोन मिल रहा है मींस फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मेरे इस रिएक्शन में पॉजिट्रॉन जनरेट हुए हैं और आपको गामा फोटोन 1.2 का मिल ही नहीं रहा है, तो दैट इज मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. आपने उसमें रिएक्शन में पॉजिट्रॉन जनरेट नहीं हुए. अगर पॉजिट्रॉन जनरेट होते तो दे वुड इजीली रिएक्टेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विल जनरेट अ गामा. नॉर्मली गामा भी नहीं होता, 2 गामा होता है. तो 0.5 के 2 गामा जनरेट होनी चाहिए बिकॉज ऑल द मासेस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. तो उसकी कैलकुलेशन तो बड़ी फर्म है. 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना ही चाहिए. अगर उससे आपका डिविएट हो रहा है तो इट मींस द रिएक्शन हैज नॉट हैपेंड. तो हम नॉर्मली इनडायरेक्टली भी मेजर, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपके पास डब्ल्यू बोसॉन और जी बोसॉन का जो मेजरमेंट हुआ है दैट इज इन इनडायरेक्ट वे. वी डोंट मेजर देम डायरेक्टली. फोटोन कैन बी मेजर डायरेक्टली. फोटोन को मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं और फोटोन कैन बी मेजर डायरेक्टली. But we don't measure the certain things directly, but we check the interaction कि भाई वो interaction हुआ क्या है और उसका outcome क्या है. If outcome is measured, then you can say that reaction has happened. This is what have we measure. तो antiparticle exist करता है और antiparticle को लोगों ने store भी किया है for a very short duration of time, and it is very difficult to store the antiparticle. You need a very strong magnetic field, an electric field, or you have to make it the suspended particle. इनको आप it will react with something else and it will just vanish. उसका रिएक्शन होना है और अब वो वैनिश हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, उसको सस्पेंडेड वे में आपको स्टोर करना है और सस्पेंडेड वे में भी वैक्यूम में स्टोर करना है. तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. इफ इट हैज बीन जनरेटेड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर देम. तो एंटी मैटर को स्टोर करना, बहुत सारी मूवी में दिखाते हैं ना कि एंटी मैटर को उसने बिल्कुल बॉक्स में रख लिया उसको बंद करके, और कई बार मूवीज में भी देखा होगा आपने, दे हैव वेरी गुड डिवाइस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, वो जनरेट कर रहा है. तो दैट मेक द मैटर टू बी सस्पेंडेड इन द वैक्यूम. तो एंटी मैटर को आप किसी बॉक्स में नहीं रख सकते. बॉक्स वैक्यूम होना चाहिए
and it should be pure vacuum. Pure vacuum, you know what pure vacuum is. Even the best vacuum can generate a vacuum, means pressure. प्रेशर के सेंस में हम वैक्यूम को करते हैं, मीन्स अगर वैक्यूम नहीं है तो 1 atm का प्रेशर है, एयर है, और यू स्टार्ट रिमूविंग द एयर, द बेस्ट वैक्यूम यू कैन गेट, वेरी बेस्ट मीन्स विथ गुड अमाउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आप रोटरी पंप लगा लो, डिफ्यूजन पंप लगा लो, उसके बाद टर्बो पंप होता है, तो आप इन सब से जाकर के 10 to the power -13 -15 atm तक जा सकते हो, उससे नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। मीन्स यू कैन स्टोर दीज चार्जेस, बट यू कैन नॉट मेक द थिंग्स वैक्यूम। आपको स्टोर करना तो या तो आप वहां चले जाओ बिल्कुल फ्री स्पेस में, देयर यू कैन स्टोर दीज पार्टिकल वेरी इजीली। यू हैव अ वैक्यूम, यू डोंट फाइंड एनी पार्टिकल। सन और मरकरी के बीच में बहुत सारा गैप है, फिर मरकरी और वीनस के बीच में गैप है, बट वहां जाके रखे हो कौन, उनको स्टोर कौन करेगा? आइदर वी हैव टू मेक द रिएक्टर एट दैट पर्टिकुलर लेवल, या तो हम जैसे हबल टेलीस्कोप आपका है, स्पेस स्टेशन आपका मूव कर रहा है, तो यू कैन परफॉर्म द रिएक्शन देयर एंड यू कैन इजीली कीप देम। आप रिएक्शन कोई बिल्कुल लेयर में करो, एंड नेचर में होता रहता है। सन तो इसको डेली प्रोड्यूस करता है, सन के लिए कोई नई चीज नहीं है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस एवरी टाइम। और सुपरनोवा और उसमें आपके एंटी पार्टिकल और पार्टिकल के शावर होते हैं, और एंटी पार्टिकल वैनिश हो जाता है फॉर विद इन नो टाइम, बिकॉज इट हैज टू रिएक्ट विद द मैटर। तो दैट इज ऑल द थिंग्स, मतलब और डिटेल में पढ़ोगे तो दैट विल बी बेटर। सिर्फ एक लेक्चर में खत्म नहीं हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे प्रोटॉन इटसेल्फ इज नॉट अ, प्रोटॉन को कई बार हम डिफाइन करते हैं ना, इट इज मेड ऑफ 3 क्वार्क, एंड नाउ पीपल आर सेइंग इट इज अ sea of quark. You have so many virtual quark within the proton also. You don't have only 3, you have several quark and anti-quark, so they are filled with quark. Proton is filled with quark. अभी तक हम सिर्फ 3 क्वार्क पे, अभी तक मैंने भी यही क्लास में कहा कि 3 होते हैं, 3 नहीं होते हैं, देयर आर सेवरल क्वार्क्स। 3 तो आपके बेसिक हो गए, बाकी सारे एंटी क्वार्क क्वार्क के पेयर बहुत सारे instantaneously they are getting generated and they are getting destroyed. So it is a sea of quark. Proton is not made up of only 3 quark, it is made up of sea of quark. कोई पूछेगा sea of quark का मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे 2 तो अप है, 1 डाउन है, बाकी सारे क्वार्क एंड एंटी क्वार्क का पेयर है। वो फिर कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है, because quark anti quark pair can annihilate themselves in just like a electron and positron. तो यहाँ पे हम कैन वी मेक वन ट्रिप देयर? हाँ बिल्कुल, आज के टाइम तो स्पेस में आपका अलाउ कर दिया ना, यू हाउ मच मनी यू रिक्वायर। आई थिंक स्पेस एक्स और बाकी कंपनी प्राइवेट फर्म भी आ रही हैं। इवन मोदी गवर्नमेंट अभी पिछले 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने एक स्पेस के ऊपर प्रोग्राम लॉन्च किया है, in which private firm and government firm can join hand, and their main aim is to do the space tourism. But space tourism is only concerned with the just go there, spend hardly half an hour and come back. ज्यादा टाइम नहीं रहते हैं। आधे घंटे और 1 घंटे का ट्रिप है, that will cost you very heavy amount, so you can have that trip. विकास ने पूछा you have to pay something, you cannot go, because all the fighter pilot जितने भी आपके spacecraft में जाते हैं ना, they have to pass the test. जो fighter pilot का टेस्ट होता है ना, वही टेस्ट आपको फॉलो करना पड़ता है, then only you can go there. You need to stable in the pressure and temperature, बहुत सारी चीजें हैं कैसे वर्क करना, it is not easy for everyone to go. but हाँ, आधे घंटे के लिए ऊपर से देख के आ सकते हो कि अर्थ इज राउंड और नॉट, आप ऊपर से चेक कर सकते हो कि अर्थ राउंड है या फ्लैट तो नहीं है। सब कहते रहते हैं फ्लैट है, यार राउंड है, बट मुझे तो फ्लैट ही दिखता है, तो आई वांट टू गो देयर एंड आई विल सी हाउ द थिंग्स लुक लाइक। तो फोटोग्राफ्स तो सभी देखते ही हैं, बट रियलिटी में देखना, यू कैन स्पेंड मनी, दैट इज अप टू यू। फ्लैट है, किसने, विकास बोल रहा है फ्लैट है, फ्लैट नहीं है, इट इज राउंड। एंड you see from a very distance, the atmosphere is very small thin layer. उसका नंबर से भी कर सकते हो। अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है, और एटमॉस्फेयर आपका कितना होता है, हार्डली 10 और 20 किलोमीटर का ही है। यू कैन इमेजिन, तो बहुत दूर से देखोगे तो देयर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर विल बी सीन फ्रॉम वेरी फार अवे। तो वो ब्लू कलर की एक लेयर दिखती है, तो उसको कवर करती है। ओके, सो ट्रिप वहां तो नहीं जा सकते हो। इफ यू वांट टू मेक अ ट्रिप, यू कैन गो टू अ न्यूक्लियर रिएक्टर ट्रिप, दैट यू कैन मेक। अगर उसकी पॉसिबिलिटी है तो दैट वी कैन थिंक ऑफ। एक बैच शायद 2 साल पहले जा चुका है टू द, यहाँ पे यूपी में है एक न्यूक्लियर रिएक्टर,
आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बिल्कुल पास में ही है, 2-3 घंटे 4 घंटे के रास्ते पे है। तारापुर, आई थिंक तारापुर है या क्या, तारापुर यूपी में है। That is electro means it is a power station which use the this nuclear power plant है. So there you can make the trip, और ज्यादा नहीं है, 1 दिन का ट्रिप होता है. You can go there और वो सब कुछ आपको समझाएंगे भी और लंच वगैरह भी फ्री देंगे. You can arrange that trip. आप मुझे बोलोगे तो मैं कोशिश कर लूंगा अरेंज करने का. फंड्स ज्यादा नहीं चाहिए, मुश्किल से 10,000 में आपकी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगी. Or you can go there and see what the nuclear reactor is and how they are producing the electricity. So if you wish, अपना भाई आपकी जो सोसाइटी है, जो फिजिक्स सोसाइटी, उससे एक बार ये प्रपोजल पुश अप करो कि हमें जाना है और 20-25 बच्चों का ग्रुप बनाओ एंड यू कैन गो देयर within a day. You can visit and come back to Delhi only. अगर दिल्ली के हो सभी तो या कहीं और के तो कहीं और से भी पहुंच सकते हो. अभी के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है, बट यू कैन गो देयर. 2 साल पहले हम गए हुए हैं, मतलब मैं तो नहीं गया था, सारी अरेंजमेंट की थी, बट फ्यू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर एंड दे हैव सीन द तारापुर. तारापुर ही है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, तारापुर ही है. उनके पास ये इस तरह के ऑफर्स होते हैं पब्लिक आउटरीच के, तो दे कॉल द पीपल्स आल्सो, मतलब स्कूल से या कहीं और से बुलाते भी हैं और बच्चे देखते भी हैं जाकर. इफ यू आर इंटरेस्टेड मेक द ट्रिप. तो अभी हम ये वाली क्लास एंड कर रहे हैं and we will start with the tutorial